Welcome back. Around 200 truck owners, locals and punch members of Kaure Pilla marched on Kepe MLA Babu Kaulekar's house. They have demanded that there should be no contractor between mine owner and the truck owners. Failure to this, locals will stage a Rasta Roko. MLA Babu Kaulekar is assured to look into the matter. आमकां ट्रांसपोर्ट हो कंपनी अंडर जायो. आमी साम स्ट्रॉंग अपोज करता कॉन्ट्रॅक्टराक. आमकां कॉन्ट्रॅक्टर नाका. कॉन्ट्रॅक्टर सदांच एक रेट घेतात आनी मॅक्सिमम रेट घेतात आनी एक सपोज फॉर एग्जांपल 180 रोड कंपनीन दिली जाल्यार 85 ते लोकां दितात आनी 100 रुपया कॉन्ट्रॅक्टर आपूण घेवन वतात. हेच कित्याक जाय की आमची ट्रकवाल्याचेच पयशे काडून कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपाचे. कंपनीन आपले थोडे पयशे दिवन त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पळोवपाक दवरपाक जाता न्हू. हे कंपनी करपाक सोदना, फक्त आमकां ट्रकवाल्यांक चिड्डून दवरपाक सोदता. सो आमगे हो डिमांड आसलो की मिनिमम 175 to 185 रेट तर आमकां मेळपाकूच जाय. However, Kepe MLA Babu Kaulekar clarified that no morcha had come to his house. Few locals came to him with a request to solve the issue between them, the mine owners and contractors. आज जे लोक येयल्ले कमी 400-500 जे लोक येयल्ले ट्रक ओनर चडांत चड ट्रक ओनर येयल्ले आनी ते मोर्चे अशे घेवन न्ही तर ते आपले रिक्वेस्ट अशे घेवन येयल्ले की ह्या वर्साक जेन्ना आमी ट्रान्सपोर्ट चालू करतले तेन्ना आमकां गव्हर्मेंटाची काही पाबंदी आसा, रिस्ट्रिक्शन आसात की 10 टनाचे वयर गाडी भरपा जायना. तेन्ना आमकां रेट जी आसा ती वाडोवन दिवची अशें तूं ओनरा कडेन उलोवचें अशें म्हणून म्हाजे कडेन मागणी केल्ली आसा. तेन्ना ओनर जे आसात ते आमकां ह्या भागांनी म्हाजे 4-5 महिने 6 महिने अशें आमचे म्हाजे मतदारसंघाक लागतात त्या ओनरा कडेन हांवें उलोवप करचें आनी जेणे करून रेट आमकां वाडोवन दिवची. आनी तेंची आनी एक मागणी आशिल्ली की चडांत चड आमकां मदीं कॉन्ट्रॅक्टर नासतना डायरेक्ट जे मायन ओनर जे आसात तेणीच डायरेक्ट ट्रक हायर करचे आनी डायरेक्ट तांकां मायन ओनरांनीच चलोवचें अशी तेंची एक मागणी आशिल्ली. Our reporter from Kepe, Ramesh Naik Raut. National Film Archive has exhibited posters of 41 Dada Saheb Phalke Awards. The exhibition will go on during IFFI at Art Gallery in Kala Academy. National Film Archives has also undertaken massive digitization work of old Indian movies. Exhibition of posters was inaugurated by Minister of States for Information and Broadcasting, Dr. S. Jagat Rakshakan on Monday morning. Dada Saheb Phalke is regarded as the father of Indian cinema. In his memory, noted filmmakers are awarded with Dada Saheb Phalke Awards every year. To salute the Dada Saheb Phalke awardees of last 41 years, National Film Archives has showcased this poster exhibition. हमारे यहाँ ना सिर्फ फिल्में लेकिन फिल्मों से जुटी हुई जो इतर बाकी चीज़ें हैं जैसे फिल्म पोस्टर्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, इनका भी हम जतन करते हैं. और हम अब IFFI में जो ये हमारी थीम है एग्जीबिशन की, दादा साहेब फाल्के पुरस्कृतों को सलाम, सैल्यूटिंग दादा साहेब फाल्के अवॉर्डीज़, तो हम ये चाहते थे कि ये जो लोग हैं, ये जो हस्तियां हैं जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रदान हो चुका है, इनका जो योगदान है भारतीय सिनेमा संस्कृति का, ये अतुलनीय है. और ये जो इनका योगदान है वो आज की पीढ़ी, चाहे आम जनता हो या फिल्म जगत के लोग हो, इनका परिचय आज की पीढ़ी को होना बहुत ज़रूरी है. A senior reporter from Panji, Rakesh Kandolkar, with video journalist Anil Sanadi. The NCP Students' Wing chief has said that Rahul Gandhi is cheating the youth and using them. The NCP announced its Students' Wing on Monday. The wing has been named as National Student Congress. The National Students Congress Chief Chandrababu Rahman aims to help the youth in academics, reduce unemployment and create good political leaders amongst the youth. The state committee for the Students' Wing will be announced within the next 10 to 15 days. First, we are going to target the employment sector. We are going to ask employment for Goan youth. We are going to have private sector participation. We are going to ask the government to assist us in helping the youth getting employed. हम लोग युवाओं के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो. सिर्फ जो भी गवर्नमेंट है वो युवाओं का शोषण करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है. मगर आज युवाओं को ठगने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी जगह जगह जाते हैं. कहीं उनको कोई लेने नहीं आता तो कॉलेज में प्रोग्राम
कहा जाता है कि कॉलेज में प्रोग्राम रखवाओ युवाओं के लिए, इस तरीके का हाल है। और सिर्फ राहुल गांधी जी ने, चाहे गोवा की जनता हो, चाहे बिहार की जनता हो, चाहे झारखंड की जनता हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान की जनता हो, युवाओं के बारे में वो कुछ नहीं सोचते। सिर्फ युवाओं के ऊपर एक ट्रम्प कार्ड खेलते हैं कि युवा मेरी तरह आएंगे। Rahman claims NCP is the only party which has maximum number of youth leaders in India. He also says the students wing is now willing to create more leaders. आपको ये मालूम होना चाहिए सबसे ज़्यादा तादाद संसद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है, जो युवाओं की है। कांग्रेस युवाओं की बात करती है, बीजेपी युवाओं की बात करती है, मगर युवा करते करते युवाओं का शोषण करती है। Our sub-editor from Panji, Pratik Parab, with video journalist Omkar Falari. Shirgaon Devasthan and Shirgaon Komidat have clarified that no mining activity is coming up at the Homkan venue of Larai Devasthan at Shirgaon. Mahajans have asked Komidat to file a case against newspapers publishing such reports. Attorney of Komunidad of Shirgaon, Achyut Goenkar, has said that the news regarding mining and Homkan venue is wrong. गेल्या 13 तारखेपासून जे कुमदाद बद्दल जे न्यूज जे येता, जे जे ह्याच्याप्रमाणे रॉंगली जे न्यूज येता त्या संबंधी आम्ही आज मिटींग दवरली आणि हे न्यूज जे बातमी ज्यो हेजे दोन्ही हेजेर येता ह्यो बातमी सारक्यो न्हू, त्यो चुकलेल्यो आसा, पूर्णपणे चुकीच्यो आसा। हेंचेर एक चूक दाखोवची आनी तेंचेर एक केस फायल करची अशें आमच्या महाजन जे आसा तेंच्यांनी मागणी केली। तर 13 तारखेर जो बातमी ती कुमदाचे बद्दल दिल्ली ती पूर्णपणे चुकीची आसली। आमी आमच्या वतीन आता जी आमच्या नांवार जागा ना ती जागा हाडूंक सोदता। जी ऑलरेडी आमच्या देवळा फाटल्यान जी 70,000 स्क्वेअर मिटर जागा जी आमकां कंपनीन पयली दिल्ली आसा ती रिफिलिंग करून आता जाल्ली आसा, ती मेळिल्ली आसा आणि हेच्या फुडें 2017 पूर्णपणे आमच्या नांवार ही जागा येतली, ह्या खातीर प्रयत्न आसा आमचे आसा। Our reporter from Shirgaon, Uday Parab. News from sports when we come back from a short break. Stay tuned.